So hi, I'm Anvay. Hi, I'm Arnav. Hello, I'm Sparsh and welcome to Don't Really Know Yet, where we're just three people discussing interesting stuff that's going around the world. Well, hello everyone, and welcome back to yet another episode of Don't Really Know Yet, where we discuss stuff that's happening around the world. And today's topic is very interesting since we have a guest speaker with us. And today's topic is human emotions and business. Well, our guest is Chetanya Malik. So, hi, Would you Chetanya. like to Hi say something everyone. about yourself? Hi, thank you so much for having me here. Uh, my name is Chaitanya Malik. I work for a non-profit organization as a public relations and social media head of department. And I love the topic. I love talking to people, especially talking to these people. Thank you so much for having me here. तो भाई Thank you. इसीलिए That's आज की जो pretty good. कन्वर्सेशन होगी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यूजुअली थोड़ा टेक और बिजनेस में रहता है और आज बिजनेस के ही एक बड़े एपिक से क्या कहेंगे एक बड़े एपिक think, पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम uh, बिजनेस मतलब हम उसको थोड़ा Yeah. साइकोलॉजिकली हाँ, इमोशनली वाइज स्टडी करना चाह रहे हैं एंड Chetanya is also a psychology student, so maybe other insight from that perspective also. एग्जैक्टली I'll try my best to help. अरे बढ़िया अरे, I'm pretty sure you will. So basically, I think we understand what business is, and from what we understand as potential business people, as I've said earlier, that I think that emotions will play a large part in how products are made and products are distributed, marketing and all. So do we think that having human emotions makes business a better thing, a better enterprise? अब इसे तो यार मतलब दो पार्ट्स हो गए एक तरह से कि एक तो आप ह्यूमन इमोशन डाल रहे हो अपने कंज्यूमर की तरफ या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशंस इनसाइड द कंपनी लाइक इनर वर्किंग में इन द लाइक वर्क एनवायरनमेंट जो होता है तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ See, basically, inner emotions company की तो जो working है वो तो I understand has a different whole spectrum जिस पे वो human emotions को काम करता है, employees and structure, corporate structure तो होता है, but making products basically for the consumer base I'm talking, not consumer base. मान लो somebody is a marketing firm, so उसमें भी काफी there's a role of psychology and human emotions that tempts people to buy something. इसका पता है Business बेस्ट ideas. Okay. हाँ कंटिन्यू बिजनेस आइडियाज तो पूरा ही पूरा ह्यूमन इमोशंस पे डिपेंडेंट होता है मेरे अकॉर्डिंग. लाइक सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक ओनर यही देखता है कि उसको लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड वो उस बिजनेस के थ्रू कैसे वो हेल्प कर सके, या फिर वो एक वाइड लोगों को देखेगा कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है लोगों को एंड मेरे बिजनेस से कैसे हेल्प हो सकता है. एंड बिजनेस शुरू भी हो जाए जब प्रोडक्ट्स इतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं एंड उन लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, तो वो हमेशा लाइफ में यही देखते हैं कि अब मेरे को क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैं अपने प्रोडक्ट में वो चीज लाऊं एंड फिर लोग को इंटरेस्टिंग लगे. लाइक जैसे फ्यू डेज बैक आई वॉच दिस मूवी जिसमें राजकुमार राव एंड कृति सैनन, क्या नाम था उस मूवी का? पता नहीं यार कौन सी वाली जो अभी टेक वाली थी, हम चार वाली. हाँ, हम दो हमारे दो, आई गेस ऐसे कुछ था मूवी का नाम. तो उसमें राजकुमार राव इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही हैज दिस कंपनी ऑफ VR. तो व्हाट हैपेंड वाज द सेल्स वर वेरी लेस एंड देन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जैसे जो लोग अपने फैमिली के साथ इवेंट्स मिस कर देते हैं वो मैं उन लोगों को एक VR के थ्रू दिखा दूं. देन हाँ, तो उसने पहले अपनी कंपनी में अर्नव कंटिन्यू. तो उसने अपनी कंपनी में अपने दो लोगों को ऐसे पूछा कि ऐसा कभी हुआ है कि तुम कभी कंपनी के काम की वजह से अपने फैमिली के पास नहीं जा पाए और समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने बोला हाँ. तो वो उसने कहा कि नेक्स्ट ट्रिप तुम्हारी कंपनी स्पॉन्सर करेगी थ्रू दिस VR. आइडिया काफी इंटरेस्टिंग सा है. हाँ See, here, yeah, as well, like, I think
for emotional appeal, it's mostly through advertisements and such हाँ that वही the company provides to advertise their object or advertise their product. There are three ways. There's like ethos, pathos, and logos, if you've ever heard of it. They're Greek terms. Ethos is for one sec. Ethos is for credibility. Like this product is made by, let's say, Elon Musk. There's logos, which is the logic, or there's pathos, which is emotional appeal. So like how like medicine markets, they show like हाँ उनकी before the इमोशनल अपील person is होती है all sad, he's like, oh no, I have this हाँ disease, that disease. But then they bring in the medicine and they're all happy. Like that's the हाँ emotional appeal. हाँ वही Even with Also, the that oil brand which advertises like uh, Akshay Kumar goes to this army and वहां पर वो लोग को वो पूड़ियां बना के they देता cook. है. हाँ They cook. Yeah. Yeah, he cooks. And he's like, ये oil से हम आर्मी को खुश कर रहे हैं, वही भाई उन लोग Yeah, को I रिस्पेक्ट think कर रहे that's हैं. an कुछ emotional इंडियन appeal. एड्स तो बस भाई रहने ही दो credibility and yeah. मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा Yeah. कुछ होगा और एड ऐसे बनेंगे कि बस नाइस वो Exactly, So I exactly. guess there are some. मतलब I Few think days back, I saw this ad. वो वैसे वॉशरूम प्रोडक्ट्स का ad था, ठीक है, लेकिन it was like we all are different, we all are in a different shape, but we are the same, so we'll use the same product and ये सब. They हाँ, play with emotions. वही भाई basically भाई हाँ जो Indian market है advertisements की we live in this country so we know that कि कितना there is a more bias towards the emotional segment they want to use कि जो अभी जैसे Indian वो oil वाला ad भी है इसमें ये cooks food right so they basically just showing this to the consumer base that even celebrities are emotionally Right. connected वही to this product so you should बट be पता too है so मेरे they're को क्या like लगता है वो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस इन अ बिजनेस लाइक जो बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स एंड द वर्क ही डिड इन एप्पल और विद एप्पल मतलब लोग आज तक ये कहते हैं कि स्टीव जॉब्स वाज नॉट एन एंटरप्रेन्योर ही वाज एन आर्टिस्ट वो बंदा ना भाई ऐसा नहीं करता था कि बस ये हो गया ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बस ओहो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगी उसका गोल ये था टेक्नोलॉजी तुमने बना दी बट आई वांट टू मेक इट लुक फैबुलस भाई बंदे को देख के मन करना चाहिए यूज करने का चीज वही मतलब इस लेवल पे उसने पता उसकी इतनी इन्वेंशन है जो उसने या तो निकाली नहीं आज तक या पता है कैलकुलेटर मैं एक वीडियो देख रहा था कैलकुलेटर ऐप तुम भाई तुम्हारा आईफोन पे होती है तुम्हारे मैक पे होती है आई गेस आईपैड पे नहीं मिलती तुम्हें कैलकुलेटर ऐप क्यों क्योंकि जो डेवलपर था वाज लाइक अरे इसको बस अपस्केल करके डाल देंगे आईपैड पे उसने कहा नहीं दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट द कैलकुलेटर 2 शुड हैव क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए या फिर स्पेसिफिकली टेलर्ड होना चाहिए कैलकुलेटर इसके लिए भी और वो बंदा इन टाइम कर नहीं पाया या फिर लाइक दे गॉट इन एन आर्गुमेंट एंड द आईपैड स्टिल डज नॉट हैव अ कैलकुलेटर तो And the greatest invention back then, the iPod. Okay, वो कैसे आया था? मतलब किसी ने अभी तो iPod ऐसे होगा ठीक है नॉर्मल है बट उस टाइम पे तो बिल्कुल ही ऐसे किसी ने सोचा नहीं था बट उसका भी आइडिया कैसे आया स्टीव जॉब्स को इट वाज वेरी इमोशनल लाइक हर डॉटर लव लिसनिंग टू म्यूजिक पूरे टाइम शी हैड दिस वॉकर विद हर ठीक है तो वन डे स्टीव जॉब सेड मैं तुम्हारी पॉकेट में दुनिया के सारे गाने फिट कर दूंगा बिना किसी मतलब साथ लेके घूमना नहीं पड़ेगा डीवीडीज एंड ऑल एंड उसने आईपॉड बना दिया See, when we talk about iPod, मतलब बात करते हैं तो iPod was such a small device and it had millions of songs in it. See, so यहाँ ना कहीं human emotions की जब बात करते हैं तो human emotions stem from art. The art here is life experiences for Steve Jobs, basically, right? So he's basically the artist. जैसे तूने बोला, so I think somewhere or the other, these products, these ads, these working with people is an art in itself. Because why do people focus so much on communication skills, observation skills? Because they want you to understand the world works on a large scale model of human relative emotions, right? So हाँ वही मतलब रिलेटेबल होने चाहिए तुम किसी भी एक लेवल पे अब अगर तुम हो क्योंकि फिर तुम्हारे प्रोडक्ट की अपील ही नहीं है कि तुमने कुछ ऐसा बना दिया जो किसी को चाहिए ही नहीं क्योंकि अगर तुमने कभी किसी ऐसा कभी हुआ नहीं किसी के साथ बट अगर तुमने पूरी लाइफ किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं करा कभी भी तुम्हारी ऐसे बात नहीं हो रही है
क्या कहेंगे कि तुम ह्यूमन नीड्स नहीं समझ रहेगा तो यू कांट ऑब्वियसली कम विद अ प्रोडक्ट दैट समवन नीड्स. ऐसा 1 in a million केस हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट नेचुरली जो किसी का भी माइंडसेट होगा वो तभी तो एक तरह से टेलर होगा स्पेसिफिक नीड्स के लिए. See, ये कह basically, why सकते हैं. we relate with phone ads or tech ads, because we are a modern generation at the moment, and that is what tempts us. है ना, हाँ. वो हमें tempt करता है कि Yeah. हमें वो चाहिए. एंड आईफोन की बात ही कर लेते हैं. आईफोन, व्हाई इज आईफोन सच लव्ड? बेसिकली व्हाई डू पीपल वांट आईफोन? Because iPhone has been created as a status symbol, and a status symbol will obviously reflect on human emotions, right? Human emotions like, I want this. This is what I makes want. me हाँ. good. This is what makes my personality better, or what makes me look better somehow. Right. So that's part of human psychology, emotions, whatever. So basically here, as Sudhanya told us that he works in the AHCF. He heads the AHCF PR thing committee, हाँ. right? Committee of हाँ. head department. So basically, you work for a non-profit, and non-profit mein it is a very huge part to talk with lots of people, and to work out the kinks of how to raise money for your cause, and to Right. invite people so that people are interested in your cause basically. So how do you do that, right? PR is a big topic in any वही कि company. लाइक इनर वर्किंग्स क्या है थोड़ी सी. Why? सो क्या होता है, पहले तो हम लोग वही देखते हैं कि हमारे एनजीओ किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, एंड बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स हमारे एनजीओ में. तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे होता है, तो उस दिन वी हैव अ वेबिनार ऑन ब्रेस्ट कैंसर. तो ऐसे हाइप होती है ऑलरेडी, एंड काफी ज्यादा इंटरेस्ट ऑलरेडी जाग जाता है, तो काफी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ जाता है. एंड लाइक when India was in a second wave situation where cases like literally shoot a lot, स्क्वायर. and तब क्या हुआ कि our human resource department, उन लोगों ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि वी नो सबके फैमिलीज में बहुत टफ टाइम चल रहा है, whenever you need a break contact us. उससे पहले तक अभी ये ब्रेक वाला सिस्टम था नहीं, क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुआ है एनजीओ, बट उस टाइम पे वी डिड दिस, एंड काफी लोग ब्रेक पर भी गए, और जब वापस आए तब जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट था वो काफी ज्यादा बेटर हो गया. हम लोग की एंगेजमेंट बढ़ती गई, क्योंकि वो लोग एक अच्छे से काम कर पा रहे थे एक ब्रेक के बाद आए. एंड सेकेंड वेव के टाइम पर ही वी डिड दिस इनफॉर्मल सेशन विद ऑल दी वॉलंटियर्स, एंड इट वाज अ वेरी फन सेशन. उसमें हमने ऐसे गेम्स खेले एंड डांस परफॉर्मेंसेस थी और ये सब. एंड सोशल मीडिया में भी कुछ पोस्ट करना होता है. वी जनरली टेंड टू पोस्ट अबाउट हेल्थ इश्यूज ओनली, बट समटाइम्स क्या होता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में जानने के लिए. It is very new, but it is not relatable. Like we have posted about left hand awareness day something. It is a very new concept. मतलब मैंने तो खुद कभी भी नहीं सुना था पोस्ट करने से पहले. बट उसके बाद हमने रियलाइज करा कि ये न्यू है बट रिलेटेबल ही नहीं है. जैसे स्पर्श ने कहा था ना, आपका प्रोडक्ट रिलेटेबल होना चाहिए, वो कितना भी न्यू हो. तो उसके बाद हमने ट्राई करा कि न्यू चीजों के साथ रिलेटेबिलिटी ऐड करने को. फैक्टर. हाँ. Okay. So basically, I think this is how a company and corporate structure. I was also part of your non-profit, and I've seen it that corporate structure, like एक formal structure होता है ना, which I did not expect from such a new NGO, was there. हाँ, true. And that was quite impressive, because working on such a level but with such formal procedures also gives people a certain respect for how it is structured. And क्योंकि informal होता है तो बहुत chaos हो जाता है कि किसको क्या करना है. So there were like group heads and all. तो वो थोड़ा अच्छा structure था. And break वाले time पे तो I was there, and after the break what I've seen is that काफी increase था, like, and lot of new volunteers also came in after the second wave of the pandemic, because मतलब ओवरऑल ही क्या कहेंगे, अगर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब रहेगी सबके अमंग, तो वही है कि मतलब तुम्हारा
इट्स क्या कहेंगे, इनएविटेबल है कि तुम्हारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो शूट अप ना हो. बट while saying this, एक थोड़ा सा ऐसे डार्क टर्न अब मैं लेना चाहूंगा इस कॉन्वर्जेशन में ही, कि अब जैसे यार बहुत सारे हमने ये स्टोरीज सुने ना कि क्या कहते हैं, पीपल रोज फ्रॉम लाइक द लोएस्ट रंक्स ऑफ मैनेजमेंट टू सीईओ पोजीशंस. जैसे वो अगर तुम्हारा अजय बंगा हो गया सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड, या पारेख अग्रवाल हो गया सीईओ ऑफ ट्विटर, ये दोनों ऐसा नहीं है कि देवर ऑलरेडी सीईओ कैंडिडेट्स एंड देन देवर इंटरव्यूड अस या समथिंग. दे Also लाइक the स्टार्टेड. CEO of Twitter. हाँ वही, सीईओ Twitter ऑफ one ट्विटर. was basically he was a software engineer and हाँ to show such growth in 10 years. एग्जैक्टली. और जो अजय Exactly. बंगा है मास्टर कार्ड का करंट सीईओ, ही आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम लाइक द लोएस्ट मैनेजमेंट पोजीशंस. तो अब यहाँ पे अब जैसे हमें मूवीज में या सीरीज वगैरह में दिखाया जाता है यूजुअली कि यू नीड टू बी, क्या कहेंगे, डबल फेस, थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल. Cutthroat basically. हाँ, थोड़ा सा Right. वैसा होना चाहिए टू रीच दोस रैंक्स. तो क्या जरूरी है ऐसा, या तुम्हारे पर्सपेक्टिव में बिना ये सब करे भी यू कैन अचीव दोस हाइट्स? आई गेस ये बाकी लोगों पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे परसीव कर रहे हैं. लाइक आई हैव सीन सम पर्सनालिटीज व्हिच टेंड टू नॉट बी डबल फेस्ड एंड स्टिल बी सक्सेसफुल. लाइक कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं ना अपने क्रिएटिविटी को लेकर या अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. हाँ, वो कि रिलेटेबल बहुत नहीं है, ज्यादा रिजिड बट होते हैं. दिस इज एन एक्वायर्ड टेस्ट. तुम सुनते रहोगे और ये तुम्हारे लाइक माइंड पे ग्रो करेगा ऐसे. राइट. Right. See, Yeah. वो basically बहुत there's रिजिड होते हैं, लेकिन उनके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मालूम होता है कि इसकी रिजिडिटी सही है, तो वो ऐसे अलग से पोलाइट होने का ट्राई नहीं करते, बट फिर भी सक्सेसफुल रहते हैं. there was this story I read which gave me it was a fictional story but it gave me like a perspective on how really things might work, and I think there's a limit to everything. Being double faceted is not something to be very proud of, right? But maybe somewhere there is a hostile working environment where you can't get through, but there's also a limit to that. But basically the person in the story was basically he was the CEO of a very big tech brand, right? One of the biggest in the valley. But when people met him, they were such an awe of him, right? And I was like, ki bhai, they must be in awe because he's such a successful person, right? Because he's made so much. But they were in awe because the guy ran a tight ship. Like you'd have to work hard, you have to do stuff, you have to do great stuff. Failure will not be accepted. But he cared about his employees a lot, right? He gave him nice bonuses, nice vacation packages. So basically, this is how I guess employees and how a work environment should be. That you have to be very hardworking, you have to be very precise with what you do, and you shall be rewarded for it quite equally, right? So I think this speaks to a more moral character and a better understanding of how human emotions we think we should work in the valley or anywhere in the world where there's any company, because being double faceted, being very cutthroat might help you, maybe, I'm not sure, but there's a certain limit to it. You can't be successful everywhere by being double faceted. Rigidity, as Chetanya said, is a character trait, and that builds character in other people, and also a more personality that people want to listen to. वही, बट पता है, लेकिन यहाँ फिर डबल फास्टेड होने के भी ना लाइक एक तरह से दो ब्रांचेस मान लो कि एक तो तुम अपने, क्या कहेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए हो रहे हो कि हाँ भाई ऐसे बैक स्टैबिंग वगैरह, खैर, या फिर जो जैक डोर्सी के साथ हुआ बेसिकली पहले के टाइम में, खैर आपका मेरे को नहीं पता इतना क्या हो रहा है सिलिकॉन वैली में, बट पहले के टाइम में ऑब्वियसली देयर वाज लाइक ए सीईओ इमेज कि भाई एक सीईओ ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे रहने, लाइक रहन सहन का उसका एक ढंग होना चाहिए. ठीक है, तो जैक डोर्सी वाज लिटरली काइंड ऑफ फोर्स्ड बाय द, लाइक मे बी द बोर्ड मेंबर्स या जो भी है, ही वाज फोर्स्ड कि भाई तुम्हें एक सर्टेन ऑरा दिखाना है लोगों को. तुम अगर इंटरव्यूज भी दे रहे हो, तुम्हें एक सर्टेन ऑरा मेंटेन करके रखना है. लाइक अगर जो अभी 2020 में जो चेंज आया जैक डॉर्सी में, अगर किसी ने नोटिस किया हो कि भाई वो पूरा ही चेंज हो गया बंदा. ही वेंट बॉल्ड, ही स्टार्टेड ग्रोइंग अ बियर्ड, नोज रिंग्स, ईयर रिंग्स, ठीक है, ही डिच्ड द सूट्स एंड एवरीथिंग. तो अब यहाँ पे भी फिर एक, क्या कहेंगे, कि या तो अब तुम्हें कोई फोर्स करे कि हम तुम्हें कंपनी से ही निकाल देंगे अगर तुम ऐसे नहीं रहोगे. There's a bias in the Silicon Valley because see, I'm not
we don't really know about the inner workings of every Right. big unicorn company, right? Hmm. Basically. Yeah. But the fact here is that we've seen that, in case of even Bill Gates is regarding as one of the most cutthroat people in the Silicon Valley of his time. Like Huh. there was nothing that would pass him and he wouldn't let anything pass. Mark Zuckerberg is shown as a very cutthroat person in the social network, the movie. So we Hmm. don't know how inner things work, but there is a general, I'd say, bias towards the fact that people have to be very cutthroat and very, I'd say, quite self-centered to, be successful in the valley, right? But Hmm. we've seen like, Parag Agrawal and Ajay Bangar, and we've also seen Indian companies like Oyo, Paytm, yeah, right? Uber, Cred, Uber is not India, What? Cred, right? Ola, no, I'm sorry, Huh. Ola, right? So Huh. basically, these people are well regarded in the Indian tech community, and Sachin Bedi Bansal, they are shown as quite humble people. Hmm. See, like I've recently read Paytm CEO's interview, and like his factoid was that my mother asked me that, do I really have this many zeros in my net worth? So I think if this isn't a show put on by the CEO, this is quite, Huh. I think, a humble thing to say in the वही market, because nobody says this basically in the वही market. और लाइक ये भी कह सकते हैं कि सीईओ कल्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता ही जा रहा है ऑब्वियसली कि जो भाई जैक डॉर्सी के साथ हुआ वो आई डोंट थिंक अब किसी के साथ होगा या होना चाहिए भी नहीं बट आई डोंट थिंक होगा भी क्योंकि अब जो भाई एक कल्चर है एक तरह से इफ यू आर अगर तुम जेनजी से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो यू आर ऑब्वियसली मोर पॉपुलर एंड हेंस योर जो तुम्हारा जो बिजनेस है तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो भी हो सकता है ज्यादा यू नो ऑडियंस अमास करे जैसे डिस्कॉर्ड का जो फाउंडर है या को फाउंडर है ठीक है वो डिस्कॉर्ड एज ए कंपनी वो बना के छोड़ चुका है ठीक है खैर डिस्कॉर्ड तो एक ऐसी कंपनी है जो अपील ही उस Just like जनरेशन Microsoft. है भाई क्या माइक्रोसॉफ्ट भी अपने प्रोडक्ट्स बना के बस छोड़ देते हैं उसमें कुछ करते नहीं है. नहीं वही अब जैसे इलॉन मस्क ले लो फॉर एग्जांपल फिर से इलॉन मस्क के बारे में बहुत बात होती है भाई यहाँ बट ठीक Every है episode. Elon वही Musk is the ideal CEO of. एग्जैक्टली Exactly. कोई उस बंदे को फोर्स नहीं कर सकता यार कि नहीं तुम्हें ये ऑरा पोर्ट्रे करना है द He गाय is the हैज aura. He is the He एग्जैक्टली is aura. yeah. He वही is उस the बंदे को basically भाई he is the इतनी model. सारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कहते हैं यार गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं एक फाइनेंस वाली एजेंसी के साथ उसका भी कुछ पंगा हो गया था बीच में उसका टैक्स वाली SEC. एजेंसी के साथ हो गया उसे अरे फर्क ही नहीं basically, पड़ता see, government candidates, like senators and all, basically force him to, like, you don't pay taxes, what are you doing? वही And he's so profound and he's so clear on what he's doing that he knows that उसने I फैक्ट्री paid शिफ्ट this कर much ली taxes. He shifted his factory and he literally told them on live internet that I have paid this many taxes. You should be clear with your information because you don't वही know anything, ओके वी basically, नाउ right? हेड टुवर्ड्स द कंक्लूजन क्योंकि आई थिंक वी हैव पास्ड आवर 18 मिनट टाइम लिमिट तो हाँ Yeah. कंक्लूजन की तरफ Yeah. बढ़ते हैं अब Still So, have so yeah. many things to talk about. वही भाई We should come back. वही See, with this 20-minute timeline, we have a pact here that if we think that something must be expanded on further, we come back for हाँ another episode, maybe some other day, right? And Yeah. I think it's been a rewarding experience for us, to have a new वही perspective from a guest speaker like हाँ that, from क्योंकि someone who ये एक has, ऐसा क्या कहेंगे फील्ड है जहाँ हम तीनों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी में ऊपर से और yeah, जो पब्लिक has a रिलेशंस है तो pivotal, वही someone who has a pivotal role in a like quite an acclaimed non-profit in the market. Yeah, Thank you so much. yeah. So I ऑलराइट सो think it's आई the गेस right time to end it. So thank you for listening. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन It was विल मीट यू इन lovely द talking to you guys. I really Same here. admire you all. Yeah. I Thank think you. you're gonna be very successful, and you guys are the most ambitious people I've ever seen in my life. Thank you we so Thanks. much. Thank you. And it Thanks. was Thanks. a Yes. pleasure having you on this episode. And the Yeah, it has been a perspectives we got, pleasure. it was honestly refreshing. So Yeah, because thank you we've for got new tuning in, perspectives. everyone. Yeah, And thank we'll you. meet you in the next episode with maybe another guest. And a happy new year because this will Yes. be posted on the 1st of January. Happy New Year. Yeah. Happy Happy New New Year. Year. Thank you. Bye bye.